my dear friends, and welcome back. This is Preeti Agarwal Garg and I am Master Teacher of Maths at Vedantu, and I welcome back you in your own sessions where you are clearing all your concepts and learning new things. So this is the continuation of the session that we already started on algebraic expression and identities. So in the first session, we all discussed about the basic concepts of algebraic expressions. What are expressions, what are terms, what are coefficients called as, what are variables, constants, factors, each and everything was sorted, right? So now this session is all about a second concept of algebraic expression identity, which is equally important to understand. That is monomials, binomials and polynomials. Why it is important? Because if you're wondering why it is important, because I tell you this is actually asked in many competitive exams. Choose the monomials, choose the polynomials, and students, they keep on confusing on the same thing. So I insist, please get your concepts clear here itself. Okay, so let's get started, and before that what I want you to do is take 10 seconds and revise all your concepts that we just studied in the last session about the terms, coefficients, terms which make up the two expressions. So let us quickly revise it. Okay, so what are expressions? Anything that is expressed, say 2x plus 3 is an algebraic expression where x is my variable, 2 is my coefficient, or you can say constant, c for coefficient, c for constant, and 3 is also definitely a constant or a coefficient, where obviously the variable is not there, so this will not be called as coefficient because there is no variable. Okay, also 2 and x, they both are what? They both are factors. 3 is also one factor, just one factor of the second term. Okay, so this is only we have discussed in the last session. Today's session is more fun filled, where we will understand about monomials, polynomials, binomials and trinomials and many more things. Okay, so this is just theory. What I want you to do is that please understand each and every concept. I know that it looks really obvious that it's that so simple है क्या पढ़ना, but let me tell you, इसी में सबसे ज़्यादा confuse होते हैं आप, right? So mono, try to understand what is the term means mono. Mono means single. Have you heard of or have you played that game Monopoly? Right? Monopoly में क्या होता है? हमें अपनी Monopoly करनी है. Monopoly is something जहाँ पे मेरा राज्य है. Right? So mono means single, just one. So mono means single term, just one term. अगर किसी भी एक्सप्रेशन में सिर्फ एक सिंगल टर्म है तो उसको हम मोनोमियल कहेंगे. Similarly, what is the meaning of bi? Di, bi. If you look at it, what is the meaning of bi? It means two, right? It means two. So, two means that the expression should have two terms. Okay? अब two terms कैसे भी हो सकते हैं? उसमें सिर्फ constant भी हो सकता है, उसमें variable constant भी हो सकते हैं, कोई भी permutation combination हम लगा सकते हैं, right? Third thing is try. Okay, try means everybody knows it. Tricycle बचपन में चला है. Tricycle को tricycle क्यों कहते हैं? पहले ये सोचो. और bicycle को bicycle क्यों कहते हैं? Have you ever thought of that? Bicycle, bi means दो. Two wheels are there. Okay, tricycle, why we call it tricycle? Everyone has started their cycling from the tricycle only, right? So tricycle means जिसमें 3 wheels हैं. So that is tri. Tri means 3. So 3 terms are there in an expression. So that is called as trinomial. Okay. Now terms आपको identify करने हैं. You have already studied what are terms, right? So terms together, they combine together to make one expression. अब एक expression में कितने terms हैं, that will decide वो monomial है कि binomial है कि trinomial है कि उसके आगे है. Okay, now very important to understand polynomial, क्योंकि उसकी definition कुछ ऐसी दी हुई है book में कि, and that's why I have taken the same definition which is given in your book. I have not made any changes in that. Okay, so क्योंकि
आपको वो चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है, वो चीज़ लिखी क्यों है. ओके, let me tell you, you should have that attitude to understand what is written in the book and why it is written. You should always wonder for why. Okay, this something you should have in yourself. ऐसा नहीं है लिख लिया, हमने पढ़ लिया, हमने समझ लिया, हो गया ख़त्म. नहीं, क्यों है? You should always think of why. There is why in every what. Okay, जो भी चीज़ है वो क्यों है वो ज़रूर पता होनी चाहिए. Okay, so polynomial. पॉलिनॉमियल की हम पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं जो बुक में दी हुई है. इन जनरल, एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग वन और मोर टर्म्स विथ नॉन-जीरो कोएफिशिएंट, नॉन-जीरो कोएफिशिएंट with variables having non-negative exponents is called a polynomial. इससे क्या समझ में आता है? पॉलिनॉमियल तो बायनॉमियल और ट्राइनॉमियल भी हैं. ओके, वन और मोर टर्म्स, दैट मीन्स मोनोमियल, बायनॉमियल, ट्राइनॉमियल को भी हम पॉलिनॉमियल कह सकते हैं. राइट, पॉली मीन्स ज़्यादा, एक से एक या एक से ज़्यादा. ये चीज़ सॉर्ट हो गई. ओके, सेकेंड थिंग, विथ नॉन जीरो कोएफिशिएंट. अब नॉन जीरो कोएफिशिएंट का क्या मतलब? कोएफिशिएंट क्या था, क्या था, क्या था? यस, कोएफिशिएंट वो था जिसमें C फॉर कोएफिशिएंट, C फॉर कॉन्स्टेंट्स. हम कोई भी एक्सप्रेशन लेते हैं, से 2x + 5, राइट, तो मेरे ये कोएफिशिएंट्स हैं या फिर कॉन्स्टेंट्स हैं, ये नॉन ज़ीरो होने चाहिए. क्यों होने चाहिए ज़ीरो? सोचा है कभी? क्योंकि अगर मैं इसको ज़ीरो बना दूंगी, राइट, सो 0 × x + 5 क्या होगा? ये ज़ीरो हो जाएगा. राइट, सो ज़ीरो तो कुछ है ही नहीं, फिर ज़ीरो का मतलब ही गायब, हमारा टर्म ही गायब हो गया. दैट्स वाई वी इंसिस्ट ऑन नॉन ज़ीरो कोएफिशिएंट. नाउ द थर्ड थिंग इज रियली इंपॉर्टेंट, विथ वेरिएबल्स हैविंग नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट्स. फॉर दैट, look at this term which I am going to write. For example, non-negative coefficients मतलब positive coefficients, right? या फिर ज़ीरो आएगा इसमें, ऑब्वियसली आएगा. नॉन नेगेटिव में ज़ीरो भी आएगा और पॉजिटिव भी आएंगे, राइट. अगर मैंने यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं लिखा है, इफ आई हैव नॉट रिटन एनी वेरिएबल, दैट मीन्स कैन आई राइट इट एज x⁻0. x⁻0 is 1. Now you have to recollect all your concepts of exponents that you have already studied, right? x⁻0 is 1, right? तो भी ये टर्म है, right? कोई प्रॉब्लम नहीं. प्रॉब्लम कहाँ आता है? जब हमारे कोएफिशिएंट का पावर वेरिएबल का एक्सपोनेंट नेगेटिव हो जाता है. क्यों, वो देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई राइट इट एज x⁻1 इज इक्वल्स टू 0, राइट. अभी एक्सपोनेंट्स की बात करें तो x⁻1 मेरा 1/x इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, राइट. नाउ कैन यू राइट इट एज 1/0 इज इक्वल्स टू x? दिस इज नॉन डिफाइंड. ओके, तो ऐसे केसेस से बचने के लिए हम पॉलिनॉमियल्स में ये कहते हैं कि वेरिएबल्स का एक्सपोनेंट्स नॉन नेगेटिव होना चाहिए. टू अवॉइड सच कंडीशंस वी have written, or the book has written, non-negative exponents. Okay, this is really important. A polynomial may contain any number of terms, one or more than one. Okay, so I hope now you are clear with the concept. This is the only major part that you have to study. Okay, now tell me, 4xy is a monomial, binomial or trinomial? Obviously monomial. If I say that 7⁴ is a monomial, binomial or trinomial? Okay, keep on thinking on that. So let's move ahead and let's see what is coming up next. These are the examples. Examples of monomials. 4x². 4x² is obviously a monomial क्योंकि एक ही टर्म है. Then -7z, obviously a monomial. 5x² मोनोमियल, 10y मोनोमियल, -9, 82m NP. कितने भी फैक्टर्स जोड़ लो, अगर एक ही टर्म है, राइट, तो वो मोनोमियल होगा. जहाँ भी प्लस जुड़ गया या माइनस जुड़ गया बीच में दो टर्म्स के, वो डेफिनेटली क्या बन जाएगा हमारा बायोनोमियल या उससे आगे का.
राइट. नाउ बायनॉमियल, दो टर्म, दो टर्म, दो टर्म, दो टर्म, दो टर्म, दो टर्म्स होने चाहिए, राइट. ट्रायनॉमियल्स, तीन टर्म्स होने चाहिए. ओके. पॉलिनॉमियल्स, नाउ इसमें चार टर्म्स हैं, इसमें सिर्फ एक टर्म है तो भी ये पॉलिनॉमियल है, इसमें दो टर्म है तो भी ये पॉलिनॉमियल है, ये तीन टर्म है तो भी पॉलिनॉमियल. जस्ट रिमेंबर, आप बस ऐसा समझो, पॉलिनॉमियल्स के हमने ये नाम दे दिए हैं, बाकी ये सारे पॉलिनॉमियल्स ही कहलाते हैं. इफ आई आस्क यू 4l plus 5m is what? Polynomial. If I ask you what is 10y, it is polynomial. So all these are polynomial, but हमने उनके नाम दे दिए, right? Simple. So let's start with the questions. PQR is what type of polynomial? I know this is not very difficult for you. Okay. Is it difficult? No, I know. PQR, इसमें कितने factors हैं? तीन factors हैं, P, Q and R. These are factors. कितने variables हैं? तीन वेरिएबल है, P, Q and R. कितने कॉन्स्टेंट्स हैं? एक भी नहीं. या फिर मैं P, Q, R का कॉन्स्टेंट क्या सोच सकती हूँ? इफ रिमेंबर वी हैव डन वन क्वेश्चन इन द लास्ट सेशन, सच क्वेश्चन. ऑब्वियसली उसका कॉन्स्टेंट क्या है? 1. वेरी गुड. नाउ व्हाट इज द टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ P, Q, R? व्हाट इट कुड बी? डेफिनेटली एक ही है, एक ही टर्म है, सो इट इज मोनोमियल. Very nice. Moving ahead to the next question. Which of the following polynomials are monomials? Again, the question is the same. It's just that you have to search amongst the option that which is monomial. Is it 1000? And please remember, if these type of questions are coming in your exam, cause there is a section where you get multiple choice questions in your exams, right? वहीं पे सारा गुड़ गोबर होता है, क्योंकि बच्चे सोचते हैं अरे ये तो बड़ा सिंपल है, तो ऐसे टिक टिक टिक. बट वॉट यू मिस आउट इज द डिटेल ऑफ योर आई, दैट यू मिस आउट. आप सोचते हो ये कॉमन है, ये प्लस है, तो नहीं, ये तो बायनॉमियल है. इवन दो यू नो द कॉन्सेप्ट, यू डू द क्वेश्चंस रॉन्ग. सो हियर इज माई टिप दैट ऑलवेज रीड योर क्वेश्चन पेपर वेरी प्रॉपरली एंड सी ईच एंड एवरीथिंग व्हाट इज रिटन इन द क्वेश्चन पेपर. ओके, सो यहाँ पे एक टर्म है, कॉमा एक और टर्म है, सो ये मोनोमियल है. लेट्स सी एंड चेक अदर ऑप्शंस एज वेल. x प्लस वाई, नो, x प्लस वाई बायोनॉमियल हो गया. दो 4 है, एक मोनोमियल है, बट x प्लस वाई बायोनॉमियल हो गया, सो दिस इज नॉट योर ऑप्शन. 5m माइनस 15a स्क्वायर, ये तो क्लियरली एक बायोनॉमियल है. एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड टी प्लस टी जेड, ये तो पॉलिनॉमियल है. देन विच इज मोनोमियल? दिस वन. सो द करेक्ट आंसर इज 1000 कॉमा PQR. दो टर्म्स नहीं है वहाँ पे. Okay, moving ahead to the next question. Which of the following polynomials are binomials? Again, this question remains the same, just the question is asked that binomials कौन से हैं, right? Now, p square q plus pq square plus 2. How many terms are there in this question? Are there three terms? Obviously. Then, what is the next question? What is the next? 4z minus 15z square. How many terms are there? 2 terms. So what will be your answer? Check other options as well. AB minus 27 single term. So your correct answer is 4z minus 15z square. Moving ahead to the next question. Which of the following polynomials are monomials? Again the same question. The options are little different. P square q plus pq square plus 2. Is it a monomial, binomial or trinomial? Is it a polynomial? Yes, of course it's a polynomial. So is it a monomial? No. Mono means single term से ज़्यादा है, so that's not my answer. 4z minus 15z square अब भी हमने देखा वो binomial है. AB plus 89 दो terms हैं, definitely binomial है. Minus 25x, it is a monomial. The correct answer is minus 25x. Moving ahead to the next question. Which of the following polynomials are trinomials? Again, now trinomials, how many terms it should be there? 3 terms. First option AB plus BC. How many terms are there? 2 terms. So not my answer. 3 raised to the power 3. Is it a polynomial by the way? कोई variable तो है ही नहीं. Obviously it's a polynomial, right? 2p plus 2q square, binomial. 2y minus 3y square plus 4y cube, obviously trinomial. So that's my answer. Moving ahead to the next question. Which of the following polynomials are not a polynomial? That's the interesting question.
Now I am giving you 10 seconds to think on this, that which is not a polynomial, because that is more important. You know what polynomials are. अभी तक जितने examples है सब polynomial के ही थे. If I would have asked you कि भाई उसमें polynomial का कौन सा है, आप बोलते मैम सारे ही तो हैं, कोई सा भी चूज कर लो, राइट. बट अभी यहाँ पे क्या चूज करना है, विच इज नॉट अ पॉलिनोमियल. For that, you have to remember the definition which we studied in the start of the session, that polynomial is something where coefficients are non-zero, and what the second thing was? Yes, the exponents of your variable should be non-negative, right? Non-negative. Is there any expression here where the exponent power is negative? Definitely, it is t. So यहाँ पे क्या है, 7x raised to the power minus 1, right? So now moving ahead to the end of the session. This was a really very short and crisp, but it's really important because ऐसे questions आपके MCQs में आते हैं, competitive exams में भी आते हैं, and you do your mistake there only. Okay, so what is your today's task? That you have to construct one monomial, 2 binomials, 3 trinomials with x and y as variables. So x and y दोनों होने चाहिए उसमें. Also, you can leave your answers in the comment section below. If you have any doubts, please leave it in the comment section below. Also, if you want any topic to be covered in this series, please leave it behind. We will definitely make videos on that particular topic. Okay, like, share and comment. Like and share to all your friends, those who think that they are missing out these concepts. Also, subscribe to our channel, hit the bell icon so that you are notified about the next video which is going to come soon. Till then, take care, bye bye, see you soon, and this is Preeti Agrawal signing off. Bye bye.